नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए आपका जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए, क्वेश्चन है हमारा ब्यूटीफुल सा। आइए देखते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है वो है आईएएस मेंस की। सब्जेक्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स 07। क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कंसीडर द लैमिनार फ्लो, कंसीडर द लैमिनार फ्लो of fluid of fluid layer falling down on a falling down on a plane at angle theta with the horizontal with the horizontal if h is the thickness of the layer of the layer in the fully developed state fully developed state, then first one, show that the velocity distribution is u is equal to g sin theta h square minus y square division over the 2 times nu, where nu is as usual kinematic viscosity. The x-axis points along the free surface and the y-axis and the y-axis points towards the plane. सेकंड वन पॉइंट है हमारा, डेवलप द एक्सप्रेशन ऑफ develop the expression of volume flow rate. And the third point it is develop the expression for develop the expression for frictional structure wall. Frictional structure wall. चलिए इसे सॉल्व इट डाउन करने का पूरा प्रयास करते हैं माय डियर साथियों। तो सबसे पहले जो है ना, हमें एक एंगल
हार्ड की ज़रूरत होगी। इंक्लाइंड वन की, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एंगल में होगा आपका, ठीक है। एंगल is to be theta over here, and there is t times of cos of theta. Here pointed loop over here, pointed load क्या होगा, जी, जी। और हमारी जो प्रोफाइल होगी, वो प्रोफाइल होगी डियर साथियों किस तरह से, पैराबोलिक। पैराबोलिक हमें प्रोफाइल दिखेगी। पैराबोलिक प्रोफाइल, हाइट इसकी h होगी नॉर्मली, ओके। हियर इट इज एंगल थीटा, जहाँ से एंगल बनाता है वो कोसाइन का कंपोनेंट, रिमेनिंग साइन का कंपोनेंट। चलिए फर्दर मूव अहेड। एट द एजेस हैव टू गिव द नेम, हियर एक्सिस इज टू बी अ कोऑर्डिनेट y। चलिए, तो हम सबसे पहले जो है कौन सा थ्योरम लगाएंगे, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन अलोंग विथ x डायरेक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, p एज अ ज़ीरो एंड w एज अ ज़ीरो। तो here प्रोफाइलिंग हो जाएगी u इज़ द फंक्शन ऑफ y। तो फुली डेवलप फ्लो, कैसा फ्लो होगा, फुली डेवलप फ्लो। So here it is del u upon del x is equal to 0, del square u upon del x square is equal to 0. Now further move ahead, ns equation in x direction क्या हो जाएगा, रो टाइम्स ऑफ du over dt is equal to s del rho upon del times of x plus mu over the del square u upon del x square plus del square u upon del y square plus del square u upon del z square plus rho times of g over the x. So here it will be rho into u times of del u of del x plus d del u over del y plus w del u over del z, which is equals to minus del times rho pressure component x plus mu del square u upon del x square del square u upon del y square del square u upon del z square plus rho g sin theta. Now there is a no pressure gradient, hence there is no pressure gradient. So we have the description over here, 0 is equal to 0 plus mu times of equation must be del square u times del y square plus rho g sin of theta is equal to 0.
So here it will be del square u over the del y square minus rho upon mu g sine theta. Now on differentiating or integrating, now we have to come on to the integrating with respect to y on both sides. So here it will be del u over the del y is equal to minus rho times g sine theta division over the mu y plus c1. So here the boundary condition at y is equal to 0, del u upon del y is equal to 0. So c1 is equal to 0. इक्वेशन क्या हो जाएगी, u is equal to minus g sin theta upon rho g का combined component gamma y square upon 2 plus c2. एक इक्वेशन का नाम दे दो, बट वी हैव द बाउंड्री कंडीशन में y की जो लिमिट है अप टू h तक जाती है और इनिशियल वेलोसिटी हम 0 रखते हैं फॉर द नो स्लिप जोन के लिए, नो स्लिप जोन के लिए. So we have on the particularly boundary condition u की value 0 minus t times sin theta upon gamma h square upon 2. So we have after calculation the equation particularly t times sin theta upon 2 gamma into h square minus y square. Okay, so on the next part further we have theta is equal to integration over 0 to h u times dy times beta. Here we have sub connotation beta is equal to 1. So let's move ahead. Theta is equal to integration over the integration 0 to h g sine theta upon 2 times of r into h square minus y ka square multiply with the dy. So here it will be theta is equal to g times of sine theta h cube division over the dr. Okay, now third condition we have the wall shear stress. Wall shear stress tau of w is equal to mu times of du upon dy at y is equal to h. So further move ahead, tau of wall is equal to mu times of g sine theta upon r into h. So tau wall is equal to minus rho g sine theta into h, right? That is the final connotation. So we have to give a gift wrap up type. चलिए ये हो गया डेरिवेशन सॉलिड डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन में जो है आपको फिगर दिखेगा जो कि कुछ शो करेगा अ नोजल एट एंड, नोजल एट एंड फायर ब्रिगेड का नोजल दिखेगा अभी आपको ऑफ पाइप क्या कर रहा है, डिस्चार्जिंग discharging pipe discharging oil from a tank, oil from a tank to atmosphere, to atmosphere.
Okay. Estimate 3. Estimate the discharge from the nozzle. Discharge from the nozzle. Discharge from the nozzle when the head H in when the head H in the tank 4 meter, the loss in the pipe, the loss in the pipe can be taken as can be taken as 20 times V square upon 2G, where V is the volume of the pipe, where V is volume of pipe, the loss of energy in the nozzle, the loss of energy in nozzle can be assumed to be can be assumed to be 0, and also determine the pressure determine the pressure at the base of the nozzle at the base of what nozzle। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए ब्यूटीफुल सा कैनवास में हम डायग्राम की कलाकृति को उकेरेंगे। Okay, here we have the height, here to here we have the height capital H, here the position is to be point number 1 over here, density 800 kg per meter cube. Now second one, 100 mm diameter pipe over here. Further sections are to be there. First one is a section 2 entry and exit of the nozzle, a small ditch type diameter 25 mm. All dimensions are to be covered. ये है हमारा फिगर। तो सॉल्व डाउन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आएगा बाय कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन जो फ्लूइड को रुकने नहीं देता है पाइप में कहीं भी। तो हियर A2V2 is equal to A3V3। फर्दर मूव अहेड V2 is equal to हमारा वैल्यू आ जाएगा 25 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू V3 विच इज V3 अपॉन 16। नाउ अपन क्या अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन।
बिटवीन पॉइंट्स क्या हैं हमारे 1 और 3 के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन से? बर्नौली इक्वेशन से P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस हेड h प्लस P3/ρg प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z3 प्लस head loss HL. So here we have H is equal to V3 square upon 2G plus 20 into V2 square upon 2G. So further we have H is equal to V3 square upon 2G plus 21/16 square V3 square upon 2G. So here it will be 1.07813 V3 square upon 2G at H is equal to 4 मीटर पे V3 हमारा क्या प्राप्त होगा? 8.515319 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी मिलेगी। जब वेलोसिटी मिल गई तो डिस्चार्ज मिलने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वी। 1000 तो डिस्चार्ज इट वुड बी 2.1881 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। A3 समझ गए ना कैसे आया है? 25 का स्क्वायर इंटू π/4 इंटू 1000 से आया है A3। तो हियर इट विल बी V2 क्या है? V3/16 है। V3/16 है तो हमारा V2 हो जाएगा 0.5332 ms मीटर पर सेकेंड। हेड लॉस इन अ पाइप HL which is equals to आपका 20 multiply with the V2 square upon 2G. It is 20 into 0.5332 whole square by 2 into 9.81. So head loss is equal to 0.29 मीटर। Now अब जो है हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे BQ बिटवीन द पॉइंट्स 1 और 2 के बीच में। तो इनिशियली 0 0 आपको प्रेशर और वेलोसिटी हेड मिलेंगे। आपको H हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 0 प्लस HL। So here the value comes out to be 4 is equal to P2/ρg plus 0.5332 whole square upon 2 into 9.81 plus 0.2899. So finally we have to catch the value P2। P2 प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा 3.6956 into 7.832। So it would be P2 is equal to 28.94 किलो पास्कल। ये रहा फाइनल आंसर दैट वी हैव टू गॉट। ठीक है, आपको एक काम करना है। क्या करना है? PM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।
हैव अ नाइस डे।